The topic we are going to discuss about is fundamental principles of organic chemistry. And the subtopic is structural isomerism. Let's learn about chain isomerism. This type of isomerism arises due to difference in the nature of carbon chain. N-pentane, isopentane and neopentane. इनमें we just have कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफर करी. जहाँ पे we have straight chain, यहाँ पे हमारे पास branching है, यहाँ पे we have further branching. So this kind of isomerism is called chain isomerism. Next one is position isomerism. This type of isomerism arises due to difference in the position of the same functional group on the carbon chain. For example, 1 butene and 2 butene. यहाँ पे कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे we have 1 and 2. So this kind of isomerism is called positional isomerism. The next one is functional group isomerism. Compounds having same molecular formula but different functional groups are said to exhibit functional group isomerism. For example, dimethyl ether and ethyl alcohol. यहाँ पे जो molecular formula है इन दोनों का वो same है, लेकिन जो structural formula है वो different है. So ether और alcohol family जो है वो functional group isomerism exhibit करते हैं. The next one is metamerism. This type of isomerism arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. Such compounds belong to the same homologous series. So यहाँ पे we have the dimethyl ketone and here we have the methyl N-propyl ketone. So diethyl ketone में कार्बन के दोनों साइड्स पे same number of carbon atoms present है. यानी कि यहाँ पे भी ethyl group है, यहाँ पे भी ethyl group है. लेकिन यहाँ पे we have one side we have methyl and on the other side we have propyl group. कार्बन सेम ही है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स चेंज होने की वजह से it exhibits metamerism. Tautomerism. This type of isomerism arises due to shifting of proton from one atom to other in the same molecule. अमाइनो एसिड में we have NH2 and OH. जब ये जो अल्कोहल का OH जो है ये NH2 के साथ अटैच हो जाएगा, it will form zeta ion. So एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है या एग्जिबिट होती है, that is known as tautomerism. Let's discuss a question. Which of the following compounds does not exhibit positional isomerism? And options are alkynes, nitroalkanes, carboxylic acids and alcohol. And the correct option is carboxylic acids. क्योंकि वहां पे जो OH ग्रुप है वो बिल्कुल लास्ट पे आता है. इसी तरह से एल्डिहाइड्स भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते. So हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अल्केन्स को जो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इसके अलावा एल्डिहाइड्स. ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती. Another question is how many esters are possible for C4H8O2? And following are options 3, 5, 6 and 7 and the correct option is 3. So this was all about the structural isomerism. I hope you have understood it well and thank you so much.